all this is very nice, but I'm extremely emotional about, and I don't get the opportunity to meet my friends, my mentors, my directors, my family, because we are all busy. We all get a little selfish also. We all run after the things that we want to, and sometimes इस दौड़ में जोड़ बहुत सारी चीजें हैं जो मिलती नहीं है या मिलने का वक्त नहीं मिलता. So मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि जब मैं मुंबई गया, दो चार लोग जो यहाँ पर के बाद, I remember मैं जब पहली बार टेलीविजन में काम करने आया तो अजीज कुंदन और सईद इसका रोल बैक उनकी कंपनी थी. मेरे पास है तो जगह नहीं थी. मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया, मुझे एड्रेस नहीं मालूम था. मैं मुंबई पहली बार आया और कुंदन, बकुल, अजीज, his whole family, सईद, सब बच्चे, राहिला, निर्मला, उन्होंने मुझे अपना घर लिया. पहले ऑफिस में रखा. बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ऑफिस में 9 बजे सुबह बोलते थे तो ये आके उठा देते थे मुझको, लेकिन चाय के साथ और गुजराती फूड के साथ. So I lived in the office in Bandra. Then मैं जब मेरी शादी हो गई तो घर में था तो अजीज मिर्जा ने मुझे अपना घर लिया. फिर उनको घर की तकलीफ थी तो वो वहाँ पे रहने लगे. मैं ये बात नहीं सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे फिल्म मेकर्स नहीं है, ये मेरे लाइफ मेकर्स हैं. मैं यहाँ पर होता है और मैं ये इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सेल्फिशली अपने लिए कह रहा हूँ क्योंकि I need to say this, I need to somehow express this. Because there are not very many people who understand and know this part of me. Because every time I go anywhere, it's all about Shahrukh Khan, Shahrukh Khan, Shahrukh Khan, the big superstar. But it's not all about me at all, ever. And then there was a time, अजीज को घर वापस चाहिए था, मुझे किराए का घर लेना पड़ा. मेरे पास पैसे नहीं थे, so I remember Rajiv called me and gave me money for my kiraya of my house. And these are small instances which I am telling you because it made me feel कि मैं मुंबई में मूवी स्टार बन सकता हूँ. बड़ी फेमस लाइन जो मेरे दोस्त ने शायद अपनी किताब में लिखी कि मैं एक दिन मुंबई को ओन करूँगा. वो हिम्मत कहने की या सोचने की इसलिए थी क्योंकि इन सब की पैकिंग थी. मेरे को पता नहीं था. आई रिमेंबर राजेश फादर सेड दैट तुम शादी करने वाले हो, शादीशुदा ही हो तो चलता नहीं है. एंड सम राजीव रियलाइज दैट दिस इज maybe I don't understand this. अब तो शादी हो रही थी, अब क्या करेंगे? So we landed up for my wedding very sweetly. I remember Abbas Mustan coming and wanting me to do this film, and I finished the film and I got the best actor award. I think my first one for a film as best actor award, and not for debut or anything. And I went to their house to meet them, and I had never understood. And I'm sorry, I'm talking personal Abbas Mustan, the hardships they lived in, but made these beautiful films and never made me realize that I had become a star and the director was still to make it there. They were the ones who made the greatest film of my career, perhaps, Basika. And so many of them have all come together and helped me become who I am, not just as a movie star or as an actor, but as the person that I am. And I owe this to them. And it's humbling that I come here. It's awkward I come here because मुझे मेरे हक का जो होता है, that's very important to me. लेकिन सारे सक्सेस के ऊपर मेरा कोई ज़्यादा हक नहीं है actually. Because if it wasn't for people like this, I remember Praveen taking me, he's an intellectual, he used to sit down with me and tell me you can be a star. So all these things, and I'm not mentioning lots of people, I'm sorry if I forget, but each one of them in the formative years of my life, whether it's Nandi, Karan, Yashuraji, Mani Ratnam sir, Himaji, I remember when, I think Rajiv will also remember this incident where एक दिन किसी इंटरव्यू में एक हेडलाइन आ गई, I think Stardust magazine थी, and उसमें हेडलाइन आ गई कि हेमा मालिनी does not know how to direct. मैंने ऐसा नहीं कहा था, या हो सकता है मैं अपना बदतमीज था, मैंने कुछ ऐसी बात कर दी. बहुत सारी चीजें कह रहा हूँ और फिर बाद में समझ नहीं आता कैसे बोल गया. But I didn't mean it, I didn't feel it. And I remember मैं सेट पे जा रहा था सुबह तो मैं छुप के जा रहा था कि हेमा जी मुझे देखना नहीं और डालेंगे, तो मैं छुप के जा रहा था, छुप के ऐसा साइड से जा रहा था. And there I come here, and she saw me, so I came to sit here. So I sat down and I said, she's gonna kill me. She's gonna tell me, what did you say in that interview? So I just sat and I was like, this moment खत्म हो गया लाइफ का.
And he looked at me. So I want to tell you something. Either you are very famous or I am very famous. I have to stop working. So it has to be your fame. And when you are famous, people write all nonsense. Go and get ready. And it was so hard. And I think, and I don't want to go on and on because actually I can write a book like this. But I think one man that we need to mention, and the only man from the non-film industry, the television industry that I've included, and we have included in the book, is Sunil Kapoor. Yeah, of course. I mean, of course, if it wasn't for him, I would not have even thought that I can act or speak. और उनके साथ कभी अजीब सा किस्सा था. हम उनके जो son-in-law थे, वो हमारे लिए किराए का घर ढूंढ रहे थे दिल्ली में. And जब हमारी माँ ने घर देखा तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा नहीं है, वो देख ले तो हम कंफर्म कर लेंगे. My father expired, we need a small house. So he said, कहाँ है आपका बेटा? ऐसे एक्टिंग करने गया है. तो उन्होंने कहा कि मेरे जो father-in-law सीरियल बना रहे हैं, तो उनको कहो वहाँ पे आके एक्टिंग कर ले. So I went there and मैंने ऑडिशन किया और करण कपूर साहब ने मुझे जो रोल किया था बड़ा स्वीट सा था. पूरे फौजी सीरियल के अंदर मेरा रोल था कि मैं कुछ गलती करता हूँ तो मुझको जो कर्नल थे वो बोलते हैं, जो कर्नल थे उस वक्त कि जाओ और उस पेड़ पर गिर कर आओ कितने कौवे हैं. तो मैं भाग के जाता हूँ और मैं कहता हूँ 4 कौवे हैं. ठीक है जवान, अब सावधान. और मेरा पूरा सीरियल ये रोल था. तो मुझे बहुत अजीब लगा यार. तो मुझे लगा यार मैं कैसे आके अपने घर वालों को बताऊंगा कि मैं कौवे कितने का रोल कर रहा हूँ. तो यही रोल है मेरा. एंड मेरी बहुत चीज़ें लक की वजह से भी हुई, तो मैं उनको भी बहुत शुक्रिया देना चाहूँ. तो मैं जब वापस आया, उनके बेटे जो थे लीड रोल कर रहे थे अभी मुझे आएगा, बट वो कैमरा भी कर रहे थे, सिनेमाटोग्राफी भी कर रहे थे. एंड सडनली ही डिसाइडेड मुझसे दोनों काम नहीं होंगे. सो करण कपूर को कोई एक्टर नहीं मिला तो मैंने कहा so I became a people guy overnight. And I did that, and it was one of the nicest, again like a family. He treated me and loved me a lot. And all of them have loved me like family. So I want to thank them all. And I want to say this, and I'm not saying it with false humility or modesty. I genuinely feel maybe the goodness I still have at the age of 51 is a carryover from what I've learned from all these wonderful men and women in my life. And when I say women, I want to take this opportunity to thank all the actresses who have worked with me because I could not dance, I could not romance. There are instances when I'm doing a duet with a girl and they are the ones who are twirling me, it's not me twirling them. And they're all so beautiful that it was very easy to love them back and say the lines I've said which I didn't even believe in. And if it wasn't for these really strong, really fantastic, really more hard-working women, then all the men in the film industry, and I say this unquantifiably, I don't think I would be this romantic star who spreads his arms and girls come running to him. And I want to genuinely thank them because I've learned a lot and I love them to death. And all my life I respect and love them. And I hope my children grow up with their children. And it's like when I came from Delhi, I had no family, I had nobody. And I tell this to everyone that I have an extended family. You know, all the filmmakers, all these leading ladies, all the producers, some other friends that I've made along the way in the film industry. If it wasn't for them, I genuinely would not be celebrating 25 years of my life here. So I thank you, and I'm extremely grateful that you made my life. Thank you very much.